हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि फेशियल हेयर रिमूवल के लिए आप कौन सा रेजर यूज करें, किस तरीके से आपने शेविंग करनी है। रेजर मैं यूज कर रही हूँ कार्मेसी का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रेजर है फॉर द वुमेन। रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने लोकल मार्केट से भी रेजर परचेज किए थे जो 50 रुपीज के 3 आ जाते हैं, पर वह बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से हेयर रिमूव नहीं करते, काफ़ी सारे हेयर छूट जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई अच्छा फेशियल हेयर रिमूवल रेज़र ढूँढ रहे हैं, तो आप इसका यूज़ करें। मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी गाइज अच्छा ये लगा। जो मेरी क्लाइंट है इनकी स्किन सेंसिटिव है। ऑलरेडी इनकी स्किन पर हल्के-फुल्के एक्ने थे, तो ऐसे में मैं इनके फेस पर वैक्सिंग नहीं कर सकती थी क्योंकि एक्ने बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ रहा है तो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए आप रेज़र का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप हेयर रिमूव करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप स्किन को क्लीन करें और स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के बाद ही आप रेज़र का यूज़ करें। कभी भी ड्राई स्किन पर रेज़र का यूज़ ना करें क्योंकि उस टाइम तो हेयर रिमूव हो जाएँगे, बाद में स्किन में काफ़ी इचिंग होगी, कई बार छोटे-छोटे दाने भी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ना आपके फेशियल हेयर बिल्कुल सेफली रिमूव हो जाएँ, तो आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल या फिर कोई अच्छी-सी शेविंग क्रीम लगाएँ, उसके बाद आप रेज़र का यूज़ करें। वैसे तो मैं एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ, ताकि जो रेज़र है ईज़िली ग्लाइड हो जाए और प्रॉपर तरीके से हेयर भी रिमूव हो जाए। इतने ही कर दो ना, यहाँ तक के साइड साइड वाले ना। नो, वैसे कर, वैसे रख। नीचे कर, रोशनी के बिना क्या ही दिखेगा। ऐसे ही रख। निकल गए ना सारे। चलो, एलोवेरा जेल लगा रही हूँ मैं। फेशियल रेजर फॉर वुमेन। स्किन
इनको होल्ड करेंगे। क्यों ब्रेक खत्म हो गई अरे एक मिनट थक जा रही हूँ।